Hello everyone and welcome back to our channel Biology Impulse. Today in this session we will discuss about the chapter number 8 of class 11th, that is Cell, the Unit of Life. Here we will discuss this chapter with the help of some very important MCQs that are important from the NEET and AIIMS point of view. So without wasting any time, let's proceed with our today's session. The very first question is, which of the following cell organelle is responsible for the extracting energy from the carbohydrates to form the ATP? The correct answer to this question is option number D, that is mitochondria. The mitochondria is the organelle that oxidize the pyruvic acid that is formed by the glycolysis of glucose and produce the energy in the form of ATP. It also stores the energy for the future uses. यानी कि जो mitochondria है ये एक ऐसी organelle है जो कि pyruvic acid को ऑक्सीडाइज करवाती है और यहाँ से जो एनर्जी है उसका प्रोडक्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ ATP. दी ATP स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और यहाँ पे जो फ्यूचर यूजर्स के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसके लिए भी इसको स्टोर किया जाता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेल ऑर्गेनेली कंटेनिंग द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इज. द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज lysosomes. A cell organelle containing the hydrolytic enzyme is lysosomes. The lysosomes are the membrane-bounded organelles which are capable of breaking down the biomolecules such as the protein, nucleic acid, carbohydrates, and lipid. They contain the acid hydrolysis or the digestive enzymes that digest the excess or the worn-out organelles, food particles, engulf viruses or bacteria and macromolecules. The correct answer is lysosome. यानी कि जो ये लाइसोसोम है ये एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है और यहाँ पे जो बायोमोलिक्यूल्स हैं यहाँ पे उनका ब्रेकडाउन हो सकता है. फॉर एग्जांपल लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन. इसके अलावा लाइसोसोम्स में कुछ हाइड्रोलाइटिक या फिर डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि जिनका काम होता है डाइजेस्ट करने का, चाहे वो कोई वॉर्न आउट ऑर्गेनेल हो या कोई फूड पार्टिकल हो, ये उसको डाइजेस्ट करवाने में मदद करवाते हैं. एंड हंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज select the wrong statement. The correct answer to this question is option number D, that is Pilli and fimbriae are mainly involved in the motility of the bacterial cells. The cyanobacteria are the motile or non-motile non-flagellated organism. The cell wall of the bacteria are composed of the macromolecules peptidoglycan, which is a repeating framework of the long glycan chains having the alternate N-acetyl glucoamine and the N-acetyl muramic acid. The mycoplasma is the smallest prokaryotic organism that lacks the cell wall but has a rigid plasma membrane rich in the sterols and the lipoglycans. The pilli are the elongated hollow appendages made up of a special protein pyline and are found in the gram-negative bacteria only. The pilli serves as in the attachment of a bacteria with the substratum, not in the movement, and therefore the correct answer is option number D. यानी कि जो पिलाई और जो फिम्ब्री होते हैं ये नॉर्मली बैक्टीरिया को अटैचमेंट में मदद करवाते हैं सबस्ट्रेटम के साथ, ना कि उसके मूवमेंट में मदद करवाते हैं, और इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द मिसमैच. द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स इन द एनिमल सेल्स. The protists are the diverse eukaryotic organisms and belongs to the third domain eukarya. The methanogens are the prokaryotic anaerobic bacteria that produce the methane gas and belongs to the domain archaea. The gas vacuoles are the aggregate of the gas vesicles and are found in the green bacteria to impart the buoyancy. The presence of the large central vacuole is a characteristic of the plant cell while the animal cell has a multiple small vacuoles, and therefore the correct answer is option number D. यानी कि जो प्रोटिस्टा है वो नॉर्मली इसके अंदर यूकैरियोट इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं. जो मिथानोजेंस होते हैं वो नॉर्मली प्रोकैरियोटिक अनारोबिक बैक्टीरियाज होते हैं. जो गैस वैक्यूल है वो ग्रीन बैक्टीरियाज में पाया जाता है बायोएंसी के लिए. अब ये जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है ये प्लांट सेल की कैरेक्टरिस्टिक है, ना कि एनिमल सेल की. और जो एनिमल सेल हैं इनके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे वैक्यूल्स पाए जाते हैं, ना कि लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, एंड देयरफॉर डी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. The next question is, which of the following structure is not found in the prokaryotic cell? The correct answer to this question is option number B, that is nuclear envelope. The prokaryotic cell lack the membrane-bound organelles and the well-organized nucleus. The nuclear membrane is absent in the prokaryotic cell. The nuclear membrane is a double membrane layer which surrounds the nucleus, and it is also made up of lipid that encase the genetic material. Hence, the correct answer is nuclear membrane. यानी कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं इनके अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज और जो वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस है वो एब्सेंट होते हैं. जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होगी. जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो बेसिकली एक डबल मेम्ब्रेन लेयर होती है
जो कि न्यूक्लियस को सराउंड करती है और ये लिपिड्स की बनी होती है और ये नॉर्मली प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं मिलती है, एंड देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. The next question is, which of the following are not membrane bound? The correct answer to this question is option number C, that is ribosomes. So ribosomes are the organelles that are not membrane bounded, and the cellular organelles with the membrane are the lysosomes, Golgi apparatus and mitochondria. The lysosomes are the single membrane bound organelles which contain the acid, hydrolysis or the digestive enzymes. यानी कि जो राइबोसोम्स है ये इकलौती ऐसी मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड नॉर्मली ये नहीं होती है. इसके अलावा जो बाकी तीनों है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेल्युलर ऑर्गेनेलीज विद द मेम्ब्रेन्स आर. द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लाइसोसोम्स, गोल्गी apparatus and mitochondria. The cellular organelles with the membrane are the lysosomes, Golgi apparatus and mitochondria. The lysosomes are the single membrane bound organelles which contain the acid, hydrolysis or the digestive enzymes that digest the excess or the worn out organelles, food particles, etc. The Golgi apparatus is a single membrane bound organelle consist of a folded and the flattened membrane which is involved in the secretion and help in the intercellular transport. The mitochondria is a double membrane cell organelle known as the powerhouse of the cell which is present in all the eukaryotic cell. So the correct answer is lysosomes, Golgi apparatus and mitochondria. यानी कि जो लाइसोसोम होते हैं वो बेसिकली एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है जिसके अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक्सेस जो वॉर्न आउट ऑर्गेनेलीज हैं उनको डाइजेस्ट करवाते हैं. जो गोल्गी एपरेटस है वो भी एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है और इसके अंदर जो मेम्ब्रेन है वो थोड़ी फ्लैटेंड और फोल्डेड होती है और ये नॉर्मली सिक्रीशन के अंदर मदद कर पाती है. वहीं अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है और इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं और ये नॉर्मली हर एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पाई जाती है. देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोटोप्लास्ट इज अ सेल. The correct answer to this question is option number A, that is without cell wall. The protoplasts are the cells with the plasma membrane, cytoplasm and nucleus which have had their cell wall removed by the action of the enzyme. The cellular enzymes digest the cellulose in the plant cell wall while the pectinase enzyme break down the pectin holding the cell together. Once the cell wall has been removed, the resultant protoplast is spherical in shape. यानी कि जो प्रोटोप्लास्ट होता है सेल का उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को इंक्लूड किया जाता है और यहाँ से जो सेल वॉल है वो एंजाइम्स की मदद से रिमूव कर दी जाती है. जो सेल्यूलेज एंजाइम होते हैं वो नॉर्मली जो प्लांट सेल जो कि सेल्यूलोज से बना होता है उसको डाइजेस्ट करवाते हैं. वहीं जो पेक्टिनेज एंजाइम है वो पेक्टिन को डाइजेस्ट करवाता है जो कि सेल को एक साथ होल्ड करने में मदद करवाते हैं. और जब ये सेल वॉल रिमूव हो जाती है तो उसके जो अंदर जो प्रोटोप्लास्ट निकलेगा वो नॉर्मली स्फेरिकल शेप का होता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बाल्बनी रिंग्स आर द साइट फॉर. द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज RNA and protein synthesis. The Balbiani rings can be defined as a large chromosome puff in the polytene chromosome. The chromosomes puff refer to the diffused and the uncoiled region present within the polytene chromosome, which are a site for the transcription of the RNA and the synthesis of protein. So the correct answer is RNA and protein synthesis. यानी कि जो बाल्बनी रिंग्स है वो ऐसे डिफाइन कर सकती है कि लार्ज क्रोमोसोम पफ्स होते हैं जो कि पॉलीटीन क्रोमोसोम में प्रेजेंट होती हैं. जो ये जो क्रोमोसोम पफ्स हैं इनको हम ऐसे रेफर कर सकते हैं कि ये जो डिफ्यूज्ड या फिर ये अनकॉइल्ड रीजन होता है जो कि पॉलीटीन क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है और यहाँ ये एक ऐसी साइट होती है जहाँ पे जो RNA है उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है और प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है. And therefore A is the correct answer. The next question is the Golgi complex plays a very important role. The correct answer to this question is option number D, that is in the post-translational modifications of the protein and the glycosidation of the lipid. The Golgi apparatus is a series of membranous stakes with the two phase, the cis phase and the trans phase. It plays an important role in the processing of protein for the secretion containing a set of glycosylation enzymes that attach the various sugar monomers to proteins and as the protein moves through the apparatus. The glycosylation is a post-translational modification. The Golgi also contain the enzyme for the glycosidation of the lipids that it is an addition of carbohydrate to the lipids. The Golgi does not involve in the digestion of protein and the carbohydrate or in the energy transferring. Therefore, D is the correct option. यानी कि जो गोल्गी एपरेटस है यहाँ पे एक सीरीज होती है मेम्ब्रेनस टैग्स की जहाँ पे दो फेसेस प्रेजेंट होते हैं, सिस फेस और ट्रांस फेस.
ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्रोटीन के सिक्रीशन के लिए, और इसके पास एक सेट प्रेजेंट होता है ग्लाइकोसाइलेशन एंजाइम्स का, और जो कि ये जो एंजाइम है ये नॉर्मली बहुत सारे शुगर मोनोमर्स होते हैं उनको अटैच करवाता है प्रोटीन के साथ, जैसे जैसे प्रोटीन इस एपरेटस के अंदर मूव करते हैं। अब जो ग्लाइकोसाइलेशन है ये नॉर्मली एक पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है। इसके अलावा जो गोल्गी है इसके पास जो ग्लाइकोसाइडेशन के लिए भी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं लिपिड के लिए, और ये जो ग्लाइकोसाइडेशन है लिपिड में, इसमें ये होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है उनको ऐड किया जाता है लिपिड के साथ। एंड देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। The next question is, a major site for the synthesis of the lipid is? The correct answer to this question is option number B, that is SER, यानी कि smooth endoplasmic reticulum. The endoplasmic reticulum is a type of organelle in the cell of the eukaryotic organism that forms an interconnected network of the flattened membrane enclosed sacs or the tubes known as the cisternae. The endoplasm in the inner core of the cytoplasm and the membranes of the ER are the continuous with the outer membrane of the nuclear envelope. There are two types of the endoplasmic reticulum, smooth and rough endoplasmic reticulum. The outer face of the rough endoplasmic reticulum is studded with the ribosomes that are the site for the protein synthesis, whereas the active smooth endoplasmic reticulum lack the ribosomes and function as the lipid metabolism and the biosynthesis of the carbohydrate metabolism, etc. And it is specially abundant in the mammalian liver and the gonad cells. The liver is a place where the lipid biosynthesis takes place. यानी कि जो लिपिड सिंथेसिस की जो मेजर साइट है वो है SER, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये दो टाइप के होते हैं, पहला है RER और दूसरा है SER। तो अब ये जो RER यानी कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनके सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और इसीलिए यहाँ पे ये प्रोटीन की सिंथेसिस करवाते हैं। वहीं जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये नॉर्मली लिपिड की सिंथेसिस करवाते हैं और ये दोनों मिलकर मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस करते हैं, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको बनाने में हेल्प करते हैं, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलीज इज इनक्लोज्ड इन अ सिंगल मेम्ब्रेन? द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज lysosomes. The nucleus is a double membrane bound organelle of the eukaryotic cell that serves to the house genetic material. The two membranes together make the nuclear envelope, whereas the mitochondrion is a double membrane bound organelle wherein the inner membrane is present in the as infolding and form the cisternae. And when we talk about the chloroplast, it is a double membrane bound organelle which is present in the inner membrane surrounds the alkaline stroma and the thylakoid system. The lysosomes are bound by a single layer of typical phospholipids. So the correct answer is option number C. यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो क्लोरोप्लास्ट है, न्यूक्लियाई है, ये एक डबल मेम्ब्रेन वाली ऑर्गेनेलीज होती हैं। वहीं अगर हम लाइसोसोम्स की बात करें तो ये इकलौती ऐसी ऑर्गेनेली है इन गिवन ऑप्शंस में से जिसके पास एक सिंगल मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, microtubules are the constituents of? The correct answer to this question is option number B, that is spindle fiber, centriole as well as cilia. The microtubules are found in the cytoplasmic matrix of all the eukaryotic cells. They also occur in the cilia, flagella, centrioles, basal bodies and the mitotic apparatus. The spindle fiber form the protein structures which help in the mitosis and meiosis. The centrioles are the two cylindrical structures of a cell organelle called the centrosome. The cilia and flagella are the fine hair-like outgrowth of the membrane, while the peroxisomes are the microbodies. So the correct answer is spindle fiber, centriole as well as cilia. यानी कि जो माइक्रोट्यूब्यूल है ये नॉर्मली जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स होता है हर एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा ये सीलिया, फ्लैजेला, सेंट्रियोल जो बेसल बॉडीज़ होती हैं और जो माइटोटिक एपरेटस है उसके अंदर भी पाया जाता है। जो ये स्पिंडल फाइबर है ये नॉर्मली जो प्रोटीन स्ट्रक्चर के बनाते हैं ये, और जो कि आगे माइटोसिस मियोसिस के अंदर मदद करवाते हैं। जो सेंट्रियोल्स की अगर हम बात करें तो ये टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं सेल ऑर्गेनेली के, जिसको हम सेंट्रोसोम भी बोलते हैं। अब जो सीलिया और फ्लैजेला है ये बिल्कुल फाइन हेयर लाइक आउटग्रोथ होती है किसी भी मेम्ब्रेन की। वहीं अगर हम पेरोक्सिसोम्स की बात करें तो ये एक टाइप की माइक्रो बॉडीज होती हैं, एंड देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, साइटोक्रोम आर फाउंड इन? द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सिस्टरी ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, एंड द एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन इज, the cytochromes are the hemoproteins containing the hem group and are primarily responsible for the generation of ATP via the electron transport. They are found either as a monomeric protein, example cytochrome C, or as a subunit of the bigger enzymatic complex that catalyze the redox reaction. The cytochromes were initially described in 1884 by the McMahon as a respiratory pigment. They are also found in the cisternae of the mitochondria as well.
यानी कि जो साइटोक्रोम्स हैं ये एक हीम प्रोटीन होते हैं जिनके अंदर जो हीम ग्रुप है वो प्रेजेंट होता है, और ये नॉर्मली जो एटीपी का जनरेशन होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के थ्रू उसके अंदर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब ये या तो एज ए मोनोमेरिक प्रोटीन प्रेजेंट हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल साइटोक्रोम सी, या फिर सब यूनिट के जैसे काम कर सकते हैं किसी बड़े एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स के अंदर जो कि रिडॉक्स रिएक्शन को कैटालाइज करवाता हो। अब ये जो साइटोक्रोम है इसको नॉर्मली डिस्क्राइब किया गया था 1884 के अंदर एज अ रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज select the correct matching of the following pair. The correct answer to this question is option number C, that is smooth endoplasmic reticulum, that is a synthesis of the lipid. The smooth endoplasmic reticulum package proteins for the transport of the synthesis membrane phospholipids and release the calcium. Other function of the smooth endoplasmic reticulum is the transformation of the bile pigment glycolysis. The smooth endoplasmic reticulum is another organelle in the eukaryotic cell that synthesizes the lipid. This organelle is located near the rough endoplasmic reticulum and it produces the phospholipids and cholesterol that helps stabilizing the membrane of the entire cell. यानी कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो नॉर्मली जो लिपिड्स हैं उनके सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द DNA इज नॉट प्रेजेंट इन। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज राइबोसोम्स। यानी कि जो राइबोसोम्स होते हैं उनके अंदर जो DNA है वो प्रेजेंट नहीं होता है, वो एब्सेंट होता है। The nucleus is the powerhouse of the chromosomal DNA, also called as the nuclear DNA. The mitochondria and the chloroplast are the semi-autonomous organelles that have the single-stranded circular DNA. The ribosomes is an assemblage of the ribosomal RNA and the ribosomal protein but does not contain its own DNA. Thus, the correct answer is option number C, that is ribosomes. यानी कि जो न्यूक्लियस होता है वो एक हाउस माना जाता है क्रोमोसोमल डीएनए के लिए, और इसको हम न्यूक्लियर डीएनए भी बोल सकते हैं। वहीं जो माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट है ये एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली होती हैं जिनके पास इनका खुद का सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। वहीं अगर हम राइबोसोम्स की बात करें तो यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे उनका खुद का डीएनए प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए जो राइबोसोम है वो करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्ट्रक्चर दैट आर फॉर्म्ड बाय द स्टैकिंग ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेड मेम्ब्रेनस sac in the chloroplast are. The correct answer to this question is option number C, that is grana. Inside the chloroplast are the stacks of disc called as the thylakoids. They are compared to the stacks of the coins when the walls of the chloroplast and they act as to trap the energy from the sunlight. The stacks of the thylakoid are called as the grana and they are connected with the extensive system of the tubules. यानी कि अगर हम क्लोरोप्लास्ट के अंदर की बात करें तो यहाँ पे एक स्टैक प्रेजेंट होता है डिस्क का जिसको हम थैलाकॉइड भी बोलते हैं, और ये नॉर्मली इसको हम कंपेयर कर सकते हैं हमारे जो स्टैक होंगे कॉइन्स के साथ किसी भी क्लोरोप्लास्ट की वॉल पे। और इसके अलावा ये ऐसे काम करते हैं कि एनर्जी जो आती है सनलाइट से उसको ट्रैप करने का ये काम करते हैं। अब ये जो स्टैक्स प्रेजेंट होते हैं थैलाकॉइड के अंदर इनको हम ग्रेना भी बोलते हैं, और ये कनेक्ट होते हैं पूरे एक सिस्टम है ट्यूब्यूल्स का उसके साथ में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द न्यूक्लियर एनवेलप इज अ डेरिवेटिव ऑफ। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, that is a smooth endoplasmic reticulum. The nuclear membrane is also called as the nuclear envelope, the nucleolema or the karyotheca. It is a double lipid bilayer membrane which surrounds the genetic material and the nucleolus in the eukaryotic cells. The nuclear membrane consists of two lipids bilayer, the inner nuclear membrane and the outer nuclear membrane. The space between the membranes is called as the perinuclear space, a region contiguous with the lumen inside of the endoplasmic reticulum. The nuclear membrane has many small holes called as the nuclear pores that allow the material to move in and out of the nucleus. And the rough endoplasmic reticulum produces the nuclear envelope in the telophase. यानी कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसको हम न्यूक्लियर एनवेलप भी बोल सकते हैं, कैरियोथीका भी बोल सकते हैं, या फिर न्यूक्लियोलीमा भी बोल सकते हैं। ये एक डबल लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है जो कि जेनेटिक मटेरियल को सराउंड करती है। अब ये जो डबल लिपिड बाइलेयर है, और हमें ऑलरेडी पता है कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड की सिंथेसिस करवाता है, hence the correct answer is option number B. The next question is the osmotic expansion of the cell kept in water is chiefly regulated by. The correct answer to this question is option number D, that is vacuoles. And the explanation to this question is the vacuole is a membrane bound space found in the cytoplasm. It regulates the osmotic expansion of a cell if kept in the water. यानी कि जो vacuole है ये एक membrane bound space होता है जो कि cytoplasm के अंदर पाया जाता है, और ये नॉर्मली जो ऑस्मोटिक एक्सपेंस होता है उसको रेगुलेट करवाता है किसी भी सेल के अंदर अगर वो सेल पानी के अंदर प्रेजेंट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
which structures perform the function of the mitochondria in the bacteria? The correct answer to this question is option number B, that is mesosomes. The mesosomes are the infolding of the bacterial cell membrane. These structures are thought to be the analogous of the eukaryotic mitochondria. As mitochondria are the site of respiration, these mesosomes are also carry out the respiration in bacteria. यानी कि जो mesosomes है ये इनफोल्डिंग होती है बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन की, और ये जो स्ट्रक्चर है इनको एनालॉगस माना जाता है हमारे यूकैरियोट के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है उसके साथ में। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है जनरली हमें पता है कि ये साइट होती है रेस्पिरेशन की, तो बिल्कुल वैसे ही जो मीजोसोम्स हैं वो बैक्टीरियाज के अंदर रेस्पिरेशन का जो प्रोसीजर है उसको करवाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंजाइम एसोसिएटेड विद द कन्वर्टिंग ऑफ फैट टू द कार्बोहाइड्रेट इज लोकेटेड इन। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ग्लायोऑक्सिसोम्स. The enzymes associated with converting the fat to the carbohydrate are located in the glyoxysomes. The glyoxysomes are the type of peroxisomes found in the plant and a few filamentous fungi. They are particularly found in the fat-storing tissues of germinating seeds, for example, peanut, soybean, etc. in the plant. They contain enzymes which are responsible for the beta oxidation of fatty acid that help in the fatty acid oxidation glyoxylate cycle, and so the correct answer is option number C. यानी कि जो एंजाइम्स एसोसिएटेड होते हैं फैट का कन्वर्जन जब करवाते हैं कार्बोहाइड्रेट के अंदर तो वो ग्लायोऑक्सिसोम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो ग्लायोऑक्सिसोम है ये एक टाइप के परऑक्सिसोम्स होते हैं जो कि नॉर्मली प्लांट और कुछ जो फिलामेंटस फंगी है उनके अंदर पाए जाते हैं। और ये जो ग्लायोऑक्सिसोम्स है नॉर्मली जो फैट स्टोरिंग टिश्यूज़ होते हैं किसी भी जर्मिनेटिंग सीड के उसके अंदर पाए जाते हैं, और इनके पास कुछ ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये नॉर्मली जो फैटी एसिड है उसके ऑक्सीडेशन में मदद करवाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनेली इज एब्सेंट इन द एनिमल सेल। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। यानी कि जो प्लांट होते हैं उसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ताकि वो जाके फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसीजर है उसको परफॉर्म कर सके और अपना जो खाना है वो खुद बना सकें, यानी जिसकी वजह से हम उनको ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। वहीं अगर हम एनिमल सेल्स की बात करें तो उनके पास क्लोरोप्लास्ट है वो प्रेजेंट नहीं होता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ट्रू ऑफ द राइबोसोम्स। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज option number B, that is it is composed of RNA and protein. The ribosomes are found in both the prokaryotic and the eukaryotic cell. In the prokaryotic cell 70S ribosomes and in the eukaryotic cell they have 80S ribosomes. The ribosomes is composed of the ribosomal RNA and the ribosomal protein. Thus the correct option is they are composed of the ribonucleic acid and the proteins. यानी कि जो राइबोसोम्स है वो दोनों में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों के अंदर। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो यहाँ पे 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, वहीं अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो वहाँ पे 80S राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ये जो राइबोसोम्स है नॉर्मली राइबोसोमल RNA और राइबोसोमल प्रोटीन से बने होते हैं, एंड देयरफॉर B इज द करेक्ट ऑप्शन. So these were some of the very important MCQs that were important from NEET and AIIMS point of view from this chapter. If you have liked our video, then please do not forget to like, share and subscribe our channel because your every subscription matters to us a lot. And you can also tell us your views in our comment section as well. Thank you so much.